Ang kasong pwede ko isang palaban sa asawa ko at sa kabit niya. Kung determinado ka talagang parusahan sila, kailangan mong mangalap ng ebidensya. Ma'am, di po kayo pwede mag-withdraw. Your account is frozen for the time being. Hindi pwede! Hindi mo pwede gawin sa akin to! Pero ko yan! Pero ko yan! Akin na yan! Pero ko yan! Hindi mo pwede gawin sa akin to! Akin na yan! Patahimikin mo na ako, Gerald! Kasi sa tuwing nakikita kita, naaalala ko lahat ng panluloko mo sa akin! Ang lalaking to, palabasin na na! Layuan mo, anak ko! Maglalaban ko yung pamilya namin! Gawin mo na ako ano gusto mong gawin sa akin. Pero hindi ko titigilan ang panunuyo ko kay Gina! Tama na yung baril! Umalis ka na dito! Umalis ka na! Layas ka na kasi! Alis mo na! Alis na! Layas ka na! Layas na! Alis na! Dad, Ulo, kahit na yan. Kumusta? Hindi ka nasaktan? ano na kamo? Ha? Tara. Gerald, tayong kaibigan lang. Mas mabuti pa kung hindi ka muna magpapakita ka na Gina. Paano kong gagawin yun, Maki? Mahal ko siya. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko kaya. Kailangan mo magtiis. Mag-sacrifice. Hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Tandaan mo, sila biktima dito. Biktima ng panloloko ni Betsy. Aminado naman ako dun eh. Pero para tanggalin ako ni Gina sa buhay niya na parang ganun lang. Yun ang hindi ko matatanggal. Lalo na't may anak kami. Paano na si Mindy? Gerald, for the time being lang naman to. Bigyan mo na ng space si Gina para makapinga, makapag-isip. Palampasin mo lang yung galit niya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko ulit nakakausap si Gina. Wala akong balak sumuko, Maki. Wala. Dad, are you feeling better? I'm okay. Ikaw yung inaalala ko. Dad, takot na takot ako kanina. Yes, galit na galit ako kay Gerald, but ayoko na naman na makagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan natin. Ayoko. Huwag ka mag-alala. Naunaan lang ako ng init ng ulo. Nakawala ko talaga sa kalagayan mo. Dad, wag mo na akong alalahanin. Mas importante sa akin ngayon na ingatan mo ang sarili mo. Ayokong sama na naman ang pakiramdam mo. Ito lang ipangako mo sa akin, Gina. Huwag na huwag kang papayag na umuwi si Gerald sa bahay na ito. Okay, he betrayed you once. He can do it again. Hinding-hindi magbabago yung ganyang klaseng tao. Makinig ka sa akin. Dad, wala na akong balak pabalikin si Gerald sa buhay ko. What about you? Kaya niyo ba? Na hindi na pabalikin si Betsy sa buhay niyo. Hindi ko na yata kaya, Julia. Ang alin? Sobrang nakakonsensya ako dahil doon sa ginawa ni Kuya eh. Wala ka namang kasalanan dun. Oo nga, pero 2 beses na niloko ng pamilya kong pamilya ni Sir Robert, pati ni Ma'am Gina eh. Tsaka, kitang-kita ko yung galit ni Sir Robert. Para bang yung galit niya sa tatay ko nun. Ewan ko ba, sobrang nakakahiya na. Tolits, hindi ka naman dinadamay. Pero papabutin ko pa ba doon? Hindi na. Kukusa na lang ako. Anong ibig mong sabihin? Anak, natatakot ako sa mga ginagawa mo. Baka lalo kang mapahamak. Baka mabuti nga manahimik ka na lang muna. Hindi pwede, Nay. Kapag tinigil ko to, parang sinuko ko na rin pagmamahal ko kay Gina. Eh, ayaw ka na nga kausapin eh. Lahat gagawin ko. Lahat tatanggapin ko hanggang mawala ang galit niya sa akin. Alam ko may pag-asa pa kami. Alam ko mahal pa ako ni Gina. Alam ko sa likod ng galit niya sa akin. Mahal pa rin ako ni Gina, Nay. Alam ko magkakayos pa kami, Nay. Magkakayos pa kami.
Ganun nga ang nangyari, attorney. Kaya nga gusto namin malaman kung ano naman ang habol ng anak ko. Eh, balita ko, napakahusay ninyong abogado. Kaya nga kayo ang nirekomenda ni Chiki. Attorney, kahit meron kaming prenup, may mga nabili naman akong mga alahas, mga property. Wala na po ba akong karapatan doon? Ang problema kasi, wala ka namang katibayan na meron kang participation financially dun sa mga assets na na-acquire mo. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig sabihin nun, pera pa rin ng asawa mo ang ginamit at pangbili ng lahat ng mga ari-arian mong sinasabi. Therefore, meron siyang karapatan na kumain ito anytime. Eh, hindi ba? Unfair naman yun. Oo nga. Paano na lang yung mga karapatan ng asawang babae? Paano pag pinagsawaan sila ng mga lalaki? Ano yun, basta-basta nila silang itatapon na parang basura? Ang problema kasi sa kaso ninyo mag-asawa, ikaw ang nagloko eh. Tapos aminado ka. Uy, ano naman niya yun? Eh, minsan pagkakamali lang naman ng anak ko yun. Oo, tsaka siya naman yung pinipili ko eh. But that's not enough. Iha, that's not enough. We can talk to Robert and his lawyer and I'll bring up your claim to him. Pero ngayon pa lang tatapatin ko na kayo. Madugo ito. Lalo na at galit na galit sa'yo ang asawa mo. Pero attorney, pinakasalan ko si Robert para makaahon ako sa kahirapan. At may itinaya din naman ako dun. Ipinuhunan ko yung sarili ko. Kaya gagawin ko ang lahat para magkaroon ako ng habol bilang asawa. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ako mabilis ang makakubra ng pera sa kanya? You're resigning? Opo, Ma'am Gina. Effective immediately po. Tungkol ba ito sa nangyari sa amin ng kuya mo? Gina, di mo na po kaya nakikita kayong sasaktan ng sobra eh. Grabe rin po kasi talaga yung ginawa ng kuya ko sa inyo. Kahit ako po mismo, nakukonsensya kahit wala naman akong ginawang masama. Ayaw ko tayo damay sa nangyari sa amin ng kuya mo. Hindi ako ganun. Ang pananakit na po nagawa ng pamilya ko sa pamilya niyo. Lalo na po kay Sir Robert. Kailangan mo ang trabaho na to. Kailangan ni Nanay Nora. Hindi mo kailangan umalis. Salamat po, Ma'am Gina. Napakabuti niyo po. Ayaw ko ipagdamot sa'yo ang oportunidad na to. At ang trabaho na to. Pero kailangan mo patunayan sa akin na naiiba ka sa kuya mo at sa tatay mo. Kailangan gawin mo ang tama at ang nararapat. Salamat po, Ma'am Gina. Sige na. Sa trabaho. Pagod na baby namin. Oh, ang cute naman. Ngayon ka lang napagod. Anong gusto mong bilhin natin later? Wow, what flavor? Fries. What about fries? Oh, what's your Gina? favorite flavor? May kailangan ka makita. Oh. French fries. Tara, let's go. Kanina pa siya na nandyan. Sabi ko sa niya, umalis na pero ayaw naman niya.
Wala naman daw siyang ginagawang masama. Aalis lang siya kapag nakausap ka na niya. Hindi, bahala siya sa buhay niya. Teka, paano kung umalan? Eh di mabasa siya. Pakialam ko kung magka-pneumonia siya. Balik na lang po kayo sa susunod na araw. Sundin mo yung Thank you sinabi po. ng attorney. Benta mo na tong kondo bago mabawi pa ni Robert sa'yo. Ma'am, sandali. Bakit? Hindi na po kayo allowed umakyat. Teka, anong hindi allowed? May unit ang anak ko dito. Hindi mo ba kami natatandaan? Natatandaan ko nga po kayo. Kaya nga po hinaarang ko na kayo dito. Kasi po, nandyan na po yung totoong may-ari ng unit nyo. Ako ang may-ari. Anong pinagsasasabi mo? Ano akala ninyo? Meron pa kayong mauuwian dito? Ang kakapal ninyo? Robert, please pag-usapan natin to. Oo nga, Robert. Itong kondo na lang ang meron kami. Yun na nga eh. Alam niyo, hindi niyo inisip. Walang-wala kayo kundi dahil sa akin. Pagkatapos ikaw, lolokohin mo pa ako. Robert, nagsisisi naman ako. Ano pa ba gusto mo? Ano mo gusto ko? Ang gusto ko, magdusa ka ng matindi. Malunod ka sa mga kasalanan ginawa mo sa akin. At lamunin ka ng impyerno kung saan ka galing. At lahat gagawin ko para makulong ka at makasuhan ka sinama sa kayo dito. Sandali, nasasaktan ako. Nasasaktan ako. Sandali! Robert, ano ba? Robert, maawa ka! Robert! Alis na! Robert, sandali, huwag mo naman akong tratuhin na parang basura na basta mo na lang itatapon. I am still your wife. Minahal kita. Minahal kita, alam mo yon. Itinaas kita. Ginawa kitang reyna ng buhay ko. Pero kung tinuring man kitang basura, dahil mas masahol pa yung ginawa mo sa akin nung pinagtaksilan mo ko! Sandali, Robert. Kaya umalis tayo. naman ang tao. Nagkakamali. Dali, isa ka ba? Ano, aminin mo sa akin? Ito, kinukonsinti mo tong anak mo. Sabihin mo sa akin. Ano? Pinaperahan niyo lang ako, di ba? Pinagplaplanuhan lang ninyo ako para perahan ako, di ba? Robert, mahal kita. Minahal kita. Mahal pa Huwag kita. na kayong magsisinungaling sa akin! Sige, umalis na kayo! Hindi ako nagsisinungaling. Tama ako! Tama ako! Sandali lang, Robert. Alis mo na. Please. Robert, wala kami po. Sandali! Dito na po tayo, ma'am. Tara na po. Robert! Tara na po. Nauna, alis kami. Alis kami. Diyan na po kayo. Huwag na po kayo pumasok. Sandali, kuya. Anak ko. Robert! Robert! Nay, paano na? Paano na tayo, Nay? Paano na tayo, Nay? Ano gagawin natin? Sit. Pati pala wala yung makasama. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरा दोस्त सैफ हम जा रहे हैं लैब पे इस वक्त और अभी हम नाश्ता करते हैं यहाँ से और फिर आगे चलते हैं। नाश्ता वगैरह अब हमने कर लिया, अब हम जा रहे हैं अपने लैब में। मेरे साथ ये मेरा दोस्त है, आज इसको भी केमिस्ट्री सेक्शन में छोड़ के आए। और आज मैंने एक जगह पे जाना है जॉब के लिए, तो देखते हैं आज उसका क्या बनता है। अभी इधर 1-2 घंटे काम यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ से फ्री होके फिर उधर जाते हैं। देखते हैं, जाके मिल आते हैं वहाँ पे कि क्या सीन बनता है। मैं रोज़ इसी रास्ते से आता जाता हूँ। इसकी वजह ये है कि ग्रीनरी बहुत पसंद है। क्यों साहब भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं। ये मेरे साथ मस्त मलंग बंदा है, इसको कोई कुछ कह ले, कोई मसला ही नहीं चलता है। ये वाला इनका छोटा सा ग्रीन प्लॉट है, क्या कहते हैं, ग्रीनरी प्लॉट यार। कुछ भी कह लो बस। हेलो जी, तो आपका भाई इस टाइम चीफ एग्जेक्टिव हेल्थ ऑफिसर डिपार्टमेंट में आ चुका है।
तो अभी सर आए हैं, उनसे मिला हूँ, फिर वो तो पता नहीं चले गए हैं, अभी तो देर तक आते हैं। यानी कि मैं उधर ड्यूटी से ऑफ करके आ गया था, 9 बजे गया था, 11 बजे फिर आ गया था। तो अब फिर रिक्शे पे इधर आया हूँ, अब देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता, तो फिर आपको अपडेट करते हैं। पर यार गर्मी बहुत पड़ रही है, खुद को भी बचाएँ और अपने प्यारों को भी बचाएँ, और पानी वानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। भाई अभी चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर आए हुए थे यहाँ पे, थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह था, तो वो अब हो गया। बाकी चल के आपको आगे स्टोरी बताता हूँ। हेलो जी, तो हम आ चुके हैं अपने हॉस्टल में, और ये बच्चा पढ़ रहा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई इधर देख के हाथ हिला दो कल इसका पेपर है और ये पढ़ रहा है। और इधर है आपका अपना भाई, अभी आया हूँ यार, इतना सफ़र था बहुत, तो आ चुका हूँ अपने हॉस्टल पे। तो उसने डॉक्टर ने भाई अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, जो आते थे वो तो बता दिए हैं, जो नहीं आते थे वो नहीं बताए। खैर अब उसने कहा है कि मैं आपको बता दूंगा, फिर उसने अपनी तरफ से वैल्यूएशन की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा सही क्वेश्चन वगैरह थे और उनके जवाब दे दिए। अब देखो वो कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, होप सो कहीं पे हो ही जाएगा, पर टेंशन नहीं लेनी उसने कहा है। चलो खैर है, इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा, जो नसीब में होगा। हेलो जी, तो हम गए हुए चाय पीने स्पेशल ढाबा में। ये मेरा दोस्त सैफ है जो पहले मिला था, ये हमारा दोस्त है, क्या नाम है यार, अब्दुल कदीर यार नाम बोले। अच्छा यार छोड़ो भैया, आज इसका आखिरी दिन है, कल इसने भाग जाने, हमने इसको कहा जरा चाय वाय इसको पिला देते हैं। तो अभी चाय बन रही है ढाबे वाले ठीक है चाचा, फ्री था ढाबे वाला, इसमें हम चाय पीने में, अभी चाय बन रही है, तो चाय आती है तो फिर उसको नोश करते हैं। ये भाई कल चला जाएगा, कल इसने घर को उड़ जाना है। ये मौलवी साहब खड़े हैं जो कि अभी चाय बना रहे हैं। ये हम निश्चित रोड पे बैठे हुए हैं, फुल हर बंदा सिगरेट पी रहा है, धुआं छोड़ रहा है। सिगरेट इतनी महंगी हो गई, फिर भी धुआं छोड़ने से बात नहीं आ रही है वहाँ। हेलो भाई, हमारी चाय आ गई है, चलो बच्चों चाय उठाओ और पियो, जल्दी करो, उठा लो भाई चाय, उठाओ। अब मेरी चाय पड़ी है, मैं भी उठा लेता हूँ। हाय हाय हाय, चाय शक्ल से तो बड़ी मजेदार लग रही है भाई। यार ये बंदा जा रहा है, हम आज चाय ले रहे हैं यार, चाय बड़ी प्यारी। चाय पी ली है, अब ये मजदूर और बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं। अरे यार ऐसी गाड़ी लेनी है इंशाल्लाह, गाड़ी की शॉर्ट आने दो यार। हमने चाय वगैरह भी पी ली है, रात का खाना भी खा लिया, कब्रिस्तान भी है, और इधर साथ कब्रिस्तान है, आपको नजर तो नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, इंशाल्लाह कभी आप और मैं, हम सब भी कब्रिस्तान भी जाएंगे। कैसे काउंटेड भाई? हाँ हाँ, मेरा दोस्त गया हुआ है पैसे निकलवाने, इसके बाद पैसा बहुत है, छोड़ो नहीं बना दे, पीछा बना है, ये पैसा निकलवा रहा है। जल्दी कर भाई, जल्दी पैसे निकाल गया, निकालो बच्चे, जल्दी पैसे निकालो। अभी ये मशीन से पैसा आएगा बाहर यार, इस पैसे के लिए तो हम मर रहे। और मेरा दोस्त देख कैसे बटन घुमा के पैसे निकाल रहे। मनोज एसी बंद है, आ गया पैसा, आ गया पैसा। मशीनें आवाज दे रही है भाई। लो जी आ गया पैसा, चलो इसको डालो वॉलेट में, भाग जाओ। अली भाई की फर्स्ट सैलरी। और ये मेरी सैलरी नहीं है भाई, ये किराए के पैसे देनी है। ਉਹ ਲੈ भाई ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ बोतल ले ला। 2000 ताज़ा ਉਹਨੇ कटाया, बोतल ले ले बोतल ले ले भाई, अपना काम करे ना करे पहले बोतल जरूर लेनी है। बेचारा जेब ढीली कर रहा है, जल्दी कर बच्चे, जल्दी ढीली कर। और तीनों ने किया जेब ढीली करने का। यार कितना प्यारा बच्चा है यार, मैंने आज मना लिया इसको।
गाइस बोतल आ गई है, बोतल अब जाके पीते हैं रूम में, आपको भी दिखाते हैं। गाइस बोतल आ गई है भाई, अब बोतल नोश करते हैं। ये अकाउंटेंट भाई आज यार 14-15 दिनों बल्कि 1 माह में पहली दफा अच्छा लगे है, आज बोतल पिला रहा है ये। यार पकड़ी पकड़ लेते हैं भाई इसको, बोतल पीनी है बोतल में यार, जल्दी डालो भाई अभी खाली पड़ा है ये। ओए होए होए आ गई बोतल, आ गई भैन बोतल बाहर, बस बहुत है। ओए बोतल तो बहुत ठंडी है भाई। अच्छा भाई बोतल आ गई है। कमरा आपको दिखाते नहीं है, हमारा कमरा बिल्कुल ही अंदर हालत में है। मेरे साथ ये 2 बनूस बैठे हुए हैं। ओए ठीक है, आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। सब कुछ खा पी लिया, अब सुकून मारते हैं, रजाई ओढ़ते हैं ऊपर और सोते हैं, सुबह फिर जागते हैं। इस बंदे का है पेपर, ये कल भाग जाएगा, दुआ करते हैं। हाँ दुआ करते हैं सबके लिए। ठीक है भाई, बोतल पीते हैं, सुकून मारते हैं, सुबह मिलते हैं। चलिए भाई बाय करते बच्चों को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यार हम सुबह सुबह अभी उठे हैं, अभी नहाए धोए हैं, तो अभी ज़रा तैयार व्यार हो रहे हैं, जा रहे हैं काम पे। तो अभी ज़रा पाउडर शाउडर लगा लें, ज़रा बालों में तेल से लगा लेते हैं, ज़रा अच्छा बन जाते हैं। तो गाइस हमने बाल वगैरह बना लिए हैं, ज़रा अपनी ज़रा शक्ल अच्छी कर ली है। हमारा दोस्त सैफी ब्रो अभी नहा रहे हैं, तो वो नहाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद फिर हम करते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर जाते हैं लैब पे। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, ये हमने मास्क वगैरह भी पहन लिया अपना, ये बटन इसको बंद कर लेते हैं। ये हमने अपना लैब कोट उठा लिया। वो सैफी भाई वो भी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और यार ये कमरे की हालत बहुत ही अबतर हुई है, वो दिखा नहीं सकते आपको। तो अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं बाहर जाके, तो फिर मिलते हैं। हमारा एक और दोस्त आ चुके हैं हारिस, जो रिक्शे वाले को भी पैसे दे रहा है। जल्दी दे पुत्र पैसे, आ जा। ये हारिस न्याजी आते हुए। हेलो जी, तो हम फ्री हो चुके हैं, 2 बज गए हैं। अब हम फुल इस टाइम यार थके पड़े हैं, काम बहुत होता है यार, बैठने का टाइम ही नहीं होता। आज मेरा ये भाई थक गया है फुल, देखो कैसे मरीजों की तरह चल रहा है। धाड़ वो इंटर्नशिप यार, इंटर्नशिप कर तो रहे हैं यार, प्रैक्टिकल है, करना पड़ता है भाई। इंटर्नशिप नहीं करेंगे हमें डिग्री नहीं देंगे। यार अब चल के यार टेस्टलेस होटल पे जाके खाना खाते हैं, बाकी सीन आके देखते हैं। ये डेली हम इसी साइड से आते जाते हैं। इस साइड पे ये पार्किंग है और उस साइड पे वो सामने इमरजेंसी है और ये इधर वार्ड वगैरह हैं। तो हम आए बैठे हैं अब खाना खाने इस टाइम। ये मेरे दोस्त है, ये अकाउंटेंट है।
जैसे ये चल कोई बात नहीं, यह चला जाएगा तो हम इसके साथ आज आखिरी खाना खा रहे हैं। कैसे सर भाई, अभी हमने ऑर्डर दे दिए, अभी थोड़ी देर तक